पे क्या करना है और आपके पिक्स क्या है? बिल्कुल मैम, देखिए नवीन फ्लोरिन आज एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकअवे गैप हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी। 6000 प्लस तक की भी जाने की पोटेंशियल रखता है ये पर्टिकुलर काउंटर। बट फ्रेश खरीदारी यहाँ पर अवॉइड करें। ऑलरेडी 14% का उछाल है, रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो अवॉइड फ्रॉम अ फ्रेश एंट्री पर्सपेक्टिव, होल्ड करें जिनके पास पोजीशन है 5400 के स्टॉप लॉस से। Coming to our preferred bets, first of all, we continues to remain bullish on couple of banking names. हमने बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र किया। 145 150 तक की अपसर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 138 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है। वी स्पोक अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इवन फंडामेंटली इट इज लुकिंग गुड, सो टेक्निकल कंफर्मेशन हमें मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो टेक्निकली एक काफी अच्छा ब्रेकआउट है। 85 90 तक की अपसाइड यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकती है। 78 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा लास्टली ओएमसी स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। जी। एक कंसोलिडेशन के बाद में एचपी बीपी आईसी तीनों ही स्टॉक्स में ब्रेकआउट है। एचपीसीएल इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने की सलाह होगी। 495 की अपसाइड टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा 476 का। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। चलिए अब समीर सर से हम बात करते हैं। समीर सर, लेंस कार्ड के आईपीओ बहुत सुर्खियों में है वैल्यूएशंस को लेके, और प्रमोटर को उंगलियां उठाई जा रही है, विच पर्सनली आई डोंट लाइक, क्योंकि it's not promoter only, it's a merchant bankers also who are to blame for the valuation that they are coming on with. But आपको लेंस कार्ड की आईपीओ पे क्या कहना है? What is your view? So honestly, consumerism is going to be getting a lot of benefits. So not only key frames of glasses, but sunglasses भी बेचते हैं. So we believe कि growth is going to come. उनकी reach काफी अच्छी हो चुकी है with over 2000 plus stores, and they want to continue to. You rightfully said, valuations बहुत ज़्यादा rich हैं. 235 times on listing, and they're talking कि थोड़ा bounce up भी होगा लिस्टिंग के बाद, क्योंकि एक्चुअली आप देखें, आई एम अवेयर ऑफ दिस बिकॉज इट वाज ऑफर्ड टू मी। प्री आईपीओ मुझे ऑफर हुआ था एट 100 रुपीज हायर प्राइस देन व्हाट द आईपीओ प्राइस वाज। तो काफी लोगों ने वो टाइम पे भी लिया हुआ था स्टॉक एट द 100 रुपीज हायर। तो मेनी ऑफ देम हैव बॉट इट एट इवन हायर प्राइसेस। तो जो आप बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैव प्राइस्ड इट रॉन्गली, मार्केट में डिमांड था, people were buying at 100 rupees even higher. Right. So I don't think the bankers have done anything wrong. जो appetite रहता है, they've done a phenomenal job. अगर आप देखो तो they've given a 100 rupee discount to जो रेट पे चल रहा है ऑफ ग्रे मार्केट में, ऑफ मार्केट अनलिस्टेड मार्केट में. So from that angle, not a this thing. But the problem is कि if growth tapers, I mean falters, not tapers, falters. अगर competition is there, Titan eyewear है ये space में, mom and pop shops है, there are a lot of competition in the space. It's not that they are the only players doing this chashme business and sunglasses and all of that. So competition obviously is there, and if agar kuch bhi falter hota hai, and agar they to show aggressive growth, they cut margins, meaning profitability mein thodi hit lete hai, then that affects valuation multiples yet again. So yes, valuations are expensive. मेरे हिसाब से I would not buy. मैं IPO में नहीं सब्सक्राइब कर रहा हूँ. My companies are not, we are not recommending anyone to subscribe. We feel कि you will get an option. अगर आपको लेना ही है तो why not buy something like a Titan instead, जिसके पास Titan eyewear है, plus you get the jewelry business, which is trading at a significant discount, and इतनी profitable business है jewelry business. They are getting into perfume, saris. They're growing all of these other businesses. Of course, watch business भी grow हो रहा है, premiumization आ रहा है. So I would much rather invest in something which is more profitable than putting money behind a lens cart, which is a single product जहाँ पे we don't have proof that they'll be able to turn profitable aggressively and leverage their stores. So for me, avoid it. Valuations high. Buy Titan. I think that's a better bet. तो सर ऑटो शेयर्स को देखते हैं, क्योंकि ऑटो में जब से जीएसटी की कटौती की बातें ही चल रही थी तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। अब नतीजे भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं, और आयशा मोटर, आज मारुति के भी नतीजे हैं। अशोक लेलैंड इज आल्सो डूइंग वेल। महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। अगर किसी को Sorry, Geetu ji, you've frozen up.
आपका क्वेश्चन जो था वो निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे था, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुके हैं, नॉट स्ट्रेच बट ऑलरेडी ऑन द वेरी हाई साइड। लॉट ऑफ जो जीएसटी बेनिफिट जो आने वाले थे वो प्राइसिंग हो चुके हैं। मारुति हैज गॉन अप फ्रॉम 12,000 टू 16,000। एमएनएम तो काफी टाइम से रन अप पे ही बैठा हुआ है। तो अगर एक काउंटर जो हमें पॉजिटिव जैसा लगता है ऑटो इंडस्ट्री में फ्रॉम अ प्योर ऑटो प्ले इज टाटा मोटर, जहां करेक्शन हुआ है, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ genuine problems that they had with Jaguar Land Rover internationally. अभी वो problems resolve होने लगे हैं in the sense that first जो resolve हुआ was the export to the US. अभी second जो resolve हो रहा है कि उनका जो cyber attack हुआ था वो एक problematic thing था. Now they are back to production. So I think Tata Motors passenger vehicle जो PV business है जो उनकी अभी listed है, क्योंकि commercial vehicle तो अभी merge हो गई है, will continue to do well and यहाँ पे upside potential है. बट रियल प्ले अगर ऑटो में देखे तो आई थिंक वो ऑटो एंसिलरीज में है, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर इन हो चुका है ऑटो में, वो अभी तक ऑटो एंसिलरी में फैक्टर इन नहीं हुआ है। तो कंपनीज लाइक मदर्स एंड सुमी वायरिंग, सोना बीएलडब्ल्यू, आस्क ऑटो, ये सब काउंटर्स पे अभी भी हमें पॉजिटिव लगता है। और टायर सेक्टर में आप देख सकते हैं जीसीएट, जेके टायर, ये सब काउंटर्स बहुत अच्छा करेंगे ओवर अ लॉन्ग टर्म। वी फील दिस इज द स्पेस टू बी इन्वेस्टेड मोर देन डायरेक्ट ऑटो प्ले, क्योंकि इट डजेंट मैटर कौन ऑटो में बेनिफिट करता है या कौन सा ऑटो बेनिफिट करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल या फिर आइस इंजन। द पॉइंट इज ऑटो एंसिलरीज cater to all of these segments, and those that cater tires, shock absorbers, brakes, lights, seats, ये सब काफी अच्छे करेंगे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। एलएनटी के नतीजे काफी अच्छे रहे, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है सर। एलएनटी को नतीजों के बाद आप क्या सलाह देंगे? एंड आईटीसी ऑल्सो, कल नतीजे आए और आईटीसी का स्टॉक भी आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इट्स अप नियरली 1%, बट इट्स स्टक इन अ वेरी टाइट रेंज। इन दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी क्या रिकमेंडेशन है? तो मैं मेरी फेवरेट स्टॉक आईटीसी की पहले बात करूंगा। वन ऑफ माय ओके। फेवरेट काउंटर्स, full disclaimer, we are heavily invested in this counter and we intend on staying heavily invested in this counter for the simple reason कि जो ये cigarette business की growth over the next 10 years is going to come is going to be great. The opportunity अभी भी बहुत large है। अगर आप देखें तो जो बीड़ी पीते हैं, if they progress slowly, if consumerism, if money flow, if free money lying at the end consumer बढ़ते रहता है, तो the transition from बीड़ी to cigarette is going to happen, and ITC is the largest player, वो benefit तो definitely करेंगे, and it's a cash spitting out business, तो we like it. अभी FMCG business जो उनकी second largest part of the business है, has got a lot of scale. They have to now continue to get more operating leverage out of that. अगर उनको they can वहां से they can keep costs under control and grow the top line, I think वहां पे profitability काफी आएगी, and once it becomes to a sizable profitable, I think वो लोग ये कंपनी भी डीमर्ज करके एक सेपरेट कर देंगे, तो वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग भी आ सकता है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन आईटीसी। आई वुड सजेस्ट कंटिन्यू टू होल्ड, कैश फ्लोज आर गुड, everything is good, valuations थोड़े से high है if I look at it on a standalone basis, but if I look at it comparative to across the FMCG factor, is probably the lowest in the industry. So from all angles it is good. अभी लार्सन एंड टूब्रो की बात करें तो रिजल्ट्स वर वेरी गुड। सरप्राइजिंगली पॉजिटिव जो आया था वाज द ऑर्डर इनफ्लो, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो फॉर द करंट क्वार्टर। if this order उन्होंने भी खुद कहा कि we may have to increase our guidance for order inflow given the kind of orders that are coming through. So if that continues to happen, then ITC, LNT, what will happen is the execution will start picking up going forward. अब जैसे वो execution pick up होगा, what you will see is growth in top line and profitability, क्योंकि operating leverages भी play out करते हैं because the head office cost and all of those will start coming down. So profits can continue to grow. Valuations are, I'll not say challenging, but they're fair, slightly a little bit above fair. पर ये मार्केट में क्या हुआ है ना कि काफी स्टॉक्स आप ले रहे हैं which are unfair valuation, so you're getting a counter which is at fair valuation plus 5%, 7%. So from that angle we like L&T on a long term basis. I would love to say कि 10% correction मार्केट में आया और ये स्टॉक भी गिरे
तो ये स्टॉक प्लीज अक्यूमुलेट करो, बट यू कैन स्लोली अक्यूमुलेट दिस स्टॉक ओवर टाइम. आई थिंक देयर इज अपसाइड. You will make money on the long term. I am quite confident. और इंडिया में अभी भी केपेक्स स्पेंड उतना प्राइवेट सेक्टर से नहीं आया है. Going forward, it will come. Government का capex on roads, railways, ports. I mean not ports, but various other sectors will continue. But Larsen, being the largest player and the most capable, will continue to do well. और एक खास बात जो एलएनटी के नतीजों में देखने को मिल रही है वो ये है कि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में उनके जो ऑर्डर्स है वो बढ़ रहे हैं. सो दैट मींस आज एक आर्टिकल भी आया था जो ये देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि प्राइवेट केपेक्स जो है इस ग्रीन शूट्स जो है उभरना फिर से शुरू हो चुके हैं. अगर ऐसा होता है तो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी एज सच. समीर सर, आईटी स्पेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा. हालांकि आप यूएस में देखें तो आईटी के बारे में, एआई के बारे में सब बात कर रहे हैं एंड दो स्टॉक्स आर रॉकिंग. बबल की बात भी हो रही है वहां पे, लेकिन इंडियन आईटी स्पेस इज लाइंग लो. क्या करना है इस आईटी स्टॉक्स के साथ अब? Yes, luckily Indian IT स्पेस में बबल बिल्कुल नहीं है. Valuations have corrected. हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि IT स्टॉक्स were overvalued at 30 times earnings, जब आपकी ग्रोथ सिर्फ टॉप लाइन पे 3 to 5% है और बॉटम लाइन पे 7 to 10% है. 3 times PEG was a little difficult to fathom. ये स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं. Now I think valuations have come to more reasonable, more stable and probably जो नए लॉन्ग टर्म एवरेजेस ऑफ IT काउंटर्स रहेंगे. Now the question comes कि ग्रोथ कहाँ से आएगा. So orders book तो है, but execution has not picked up for whatever reason. The US में growth, I mean, people are not spending the money because they're worried about maybe a coming slowdown जो हो सकता है in the US, and that has been putting some amount of pressure on Indian IT. I think Indian IT is a great investment अगर आप dividend yield से देखो या फिर you want a 10-12% low risk kind of return. तो ये एक बहुत अच्छा स्पेस है. बट इफ यू आर अग्रेसिव इन्वेस्टर और आप इक्विटी में रिस्क लेके इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस इज नॉट द सेक्टर दैट आई लाइक एंड नॉट आई वुड रेकमेंड. तो हम अभी भी बोलते हैं कि आईटी विल रिमेन इन अ लल फॉर सम मोर टाइम, मे बी 1 more year. और आपने जो राइटफुली कहा कि यूएस में एआई पे बहुत फोकस हो रहा है, हमारी इंडियन आईटी कंपनीज ने, गीतू जी, टू सम एक्सटेंट आई बिलीव मिस्ड opportunity to get into IT at the AI at the same time as maybe some of the global companies. We are far behind. We are going to have to do a catch up. And I don't know kitna space rahega for Indian IT companies even after they do a catch up, because all your international companies are coming to India to capture this Indian market. क्योंकि we are at the end of the day the largest population in the world, और ये सब searches, ये सब AI के जो tools है, अगर if we are not able to keep up with them, and if already someone को used to हो जाता है particular AI tool, it's not necessary कि they change it just because pricing में ज्यादा फर्क नहीं है, because you cannot change the pricing that drastically. और अभी आप देखिए तो what is Google doing? Google is tied up with Jio कि use our AI tool for 18 months free of cost. So people start getting used to these tools, and then जब actual time of payment आएगा, they will probably go on with the person who's giving you, जहाँ पे आप used to हो गए, आप the system is understood by you. So I think Indian IT to some extent has missed the boat. Steady earnings रहेंगे, growth रहेगा थोड़ा सा, profits रहेंगे, आपको 10-12% return with dividend मिल जाएगा. So if you have that view, safety from that angle, I think it's a good sector. But I would say it's far better than putting money in an FD or a debt fund, but not an equity investment. तो कोई ऐसा हिडन जेम, कोई नई इनिशिएशन, एनी न्यू रिपोर्ट ऑन एनी कंपनी? सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारे स्टॉक्स है. एनी न्यू रिसर्च तो ऐसा फिलहाल निकाला नहीं है, बट हमारे 2-3 स्टॉक्स है जो अभी वैल्यूएशंस और भी गिरे हुए स्टॉक्स है, फॉलन मोर. एक है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, जो हम काफी टाइम पॉजिटिव रहे थे. वी बिलीव द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस विल डू वेल, स्पेशली जब रिलायंस उनके ऑर्डर्स देंगे, बिकॉज ये रिलायंस की सब्सिडरी है, तो ऑर्डर फ्लो फॉर देम विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. उनके पास प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट कभी खत्म होने आए हैं. तो दिस इज वन ऑफ द, I think this is a gem that is very much visible, but कोई उस पे रिस्क नहीं लेना चाहता है फिलहाल. But I think this is a multi-bagger stock over the next 4 to 5 years. तो ये एक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं.
And then we continue to like companies like we've discussed before, First Cry, CAMS. Okay. Then if you look at it, now auto ancillary में Sona BLW, again well covered, well researched, but I think जो opportunity जो उनके नए products development में आ रहे हैं, when they hit the market, the counter will do really well. Stock has corrected from 700 to 500 because ये सब संजय कपूर के डेथ के बाद the fighting between the promoters is happening कि who holds the stake and all of that, but professionally run company है, so it doesn't really come in the way. In fact, अगर High Court doesn't allow the promoters to sell, तो वो 30% तो market से फिलहाल निकल चुका है, so that stock cannot come in the market, तो kind of helps in a way. So we have counters like this which we continue to invest in. Chemicals में counters है जो काफी गिरे हुए हैं, बालाजी Mines है, Clean Sciences है, Deepak Nitrate hai. So, these are counters which long term will eventually bounce back and will do well. So, there are lots of counters you can continue to look at jahan correction hue hai and which have good businesses. So, one more counter I would like to just throw in for the heck. I mean, it's something we've discussed before. HEG. They're making graphites. They're going to be making graphites that go into the electric batteries for cars, electric vehicles. So, unka plant will come up in the next maybe 8 to 12 months. And once that comes about, unki top line profitable growth will continue. Graphite business will continue to do well because the shift is going to happen from reducing steel from blast furnace to electric arc furnace, जिसमें graphite है. Graphite में there are 7 players globally, जो 2 players India में हैं. Graphite India और HEG's capacity is bigger, so we like HEG. So ऐसे counters हैं जो आप invest कर सकते हैं from the next 3 to 5 years and you make very good money. समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक